But I failed in 11th grade in English. Can you believe that I failed? Oh no. When we draw a triangle, तो उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं. एक कॉर्नर वुड बी योर एजुकेशन विच इज़ नॉलेज, इज द नेटवर्किंग, एंड थर्ड इज द करियर एस्पिरेशन. एंड कहाँ से क्या, दैट आई डिडंट नो. माई फोकस वॉज टू गेट द बेस्ट ऑफ द क्लास एजुकेशन एंड नॉलेज. वो जहाँ से मिलेगा आई विल ट्राई दैट. So hello everyone, today we have Lipsy here. उन्होंने first of all coming from Hindi medium background in India, सारे के सारे odds break किए to be at a Man company, not just one. इन्होंने सारे की सारे interviews crack की, plus got the dream education, वो भी at MIT in 1 year management degree. We will get into all the depth of it. So first of all, can you please introduce yourself, Lipsy? Hey, hi. Thanks for having me. My name is Lipsy, or I come from Jamshedpur, which is a tier 2 city back home. Until my 10th grade, I studied in Hindi medium, and then I did my engineering from Bharati Vidyapeeth University. Worked in Cognizant Technology Solutions in India and in US, and then got into MIT for 1 year program in supply chain management. I also took certification from Sloan in business analytics and sustainability, and then got offers from Amazon, Google, Meta, Adidas, Nike. I'm grateful for all that, but Wow. it didn't come easy. It was a struggle, which we're going to talk about. श्योर तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एजुकेशन बैकग्राउंड जब आप 9th 10th में थे, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में थे. तो जिनको नहीं पता, मैं भी 1 साल पंजाबी मीडियम में रहा हूँ. बहुत डिफिकल्ट होता है एक एक वर्ड. आप एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण. गुरु सॉरी रिपीट करना. गुरुत्वाकर्षण, that's gravitational force. वाह. तो ये सारे वर्ड्स के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट है और इंडस्ट्री में जाना. हाउ डिड यू बिल्ड योरसेल्फ कि हिंदी मीडियम से आप 11th क्लास में ट्रांजिशन कर पाओ इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश? Like anybody else. जैसे देखो, as I told you, पहले मैं पढ़ती थी, only maths was my friend, like best friend I could say, क्योंकि maths में ultimately you just focus on numbers and you start and then you prove, hence proved. Hence proves just 2 words, right? So that was my strength. So I played on my strength कि maths तो मेरा वैसे भी अच्छा था, but I failed in 11th grade in English. Can you believe that I failed? Oh no. Yeah. But it's not what we face, it is what we aspire to achieve. So बस even though the 10th में मेरे less than 60% marks आए थे, because I was only good at science and maths. So 11th में and 12th में I majorly focused on learning about like transition, जो translation होता है ना, that was hard. Like गति, और वो गति को now I'm calling speed. So जो वो पूरा explanation होता है ना, वो मुश्किल हुआ. तो my focus was कि मैं कैसे like basic build the foundation, utilizing strengths as mathematics and computer science, but build the foundation in chemistry and physics, क्योंकि उसमें बिना chemistry physics के we can't move forward, because I wanted to do engineering. So ये बेबी स्टेप था मेरा. तो 11th and 12th, for people it is 11th and 12th, for me it was like 5-6. So I started, तो ये analogy ले सकते हो, जैसे when kids start to learn second third grades में या fourth fifth में जाके कहते हैं कि they use words, right, कि अच्छा speed ऐसे हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें मैं 11th 12th में सीखती थी. तो I just used my time in 11th 12th to build the foundation, learn the words and play on my strength. तो वो बहुत, तो it took a lot of time for me. तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उस पर दिया. मैं बहुत ही सिंसियर हो गई थी 11th 12th में, क्योंकि अब सारा स्पोर्ट्स का वो सारा फोकस अब सिर्फ पढ़ाई में जा रहा था. तो व्हाट वाज योर ड्रीम जब आप 11th में एंटर किए? आपका क्या ड्रीम था? एंड इफ यू कैन शेयर, हु वाज योर इंस्पिरेशन? आप क्या बनना चाहते थे एट द टाइम? एट द टाइम मेरी इंग्लिश क्लास टीचर थी. हर नेम वॉज लीला चंडेल, and she was very independent, and she told us story in 8th grade. I was still in full time sports, ठीक है. तो उसने अपनी स्टोरी बताई थी, which was a very courageous story, that how she built her own life and she became independent and she became an maths teacher. Maths teacher थी वो. तो उनकी story was very inspiring to me. But you know, for me, life was all about constraints, such as when one door was closed, when there was one constraint, so I had to find another way to channelize my energy. So as the question that you asked me, 9th 10th में what was my vision,
my only vision was to become an independent woman, because back then, the society that I came from, women used to get married early with dowry, so there's so much load on the family members, you know. And I knew the situation of my family back then. I just knew that given this constraint, I just need to become financially independent. I need to um, you know, create a life for me so that I can create that independence for others as well. So first I need to become that and then maybe help others. वेरी वेल सेड। तो 11th 12th के बाद आपका क्या ड्रीम था, इंजीनियरिंग में जाने का या मेडिकल में या फिर? Because that was not medical for sure. मेरे से वो frogs को काटने वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं. So definitely it was mathematics. So and I only knew based on the limited information I had, mentors were so important. तो मुझे पता था कि अगर मुझे right जितना information, जितना ज्ञान मुझे उस time पे था, I knew that engineering is the way for me to achieve that goal of independence through knowledge, through money, or through you know, decision making. So तो आपने बताया आपका मैथमेटिक्स फेवरेट था, अब तो ये तो क्लियर है कि आपने इंजीनियरिंग की। तो आप बताना कि इंजीनियरिंग में आपने कौन सा मेजर चूज किया, एंड आपका इंजीनियरिंग के बाद क्या ड्रीम था? आपने विजन क्लियर रखा था कि आपको इंजीनियर बन के आपको इस फील्ड में जाना है, या फिर आपको कॉग्निजेंट जैसे आपने बताया कुछ क्लियर था क्या? What was that journey? So we know that we don't choose the stream back home, right? It's based on our grades or ranking. The streams chooses us. मैंने तो बस AIEEE दे दिया था कि बस अब इंजीनियरिंग करना है. अब because of my ranking, I got chemical engineering. और मुझे ये पता था कि सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में बेस्ड ऑन आवर स्कोर वी कैन चेंज इट टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. बट आई गॉट, जो भी मुझे मिला आई रिसीव्ड इट. ओके, केमिकल इंजीनियरिंग है, पढ़ूंगी मैं जो भी मिला है. सो इट वाज नॉट, यू नो, आई डिडंट चूज इट, chemical engineering chose me. So that's one. What was the second question? अब केमिकल इंजीनियरिंग से आपने क्या विजन बनाया कि आपने लाइक वर यू हैप्पी विद इट, और लाइक आपको लग रहा था कि मैं तभी से प्लान करूंगी माय मैनेजमेंट डिग्री सो दैट यू कैन डू अ करियर स्विच? काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या होता है कि दे रियलाइज कि यार इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा, अब MBA करेंगे तब करियर स्विच करेंगे, या फिर मैनेजमेंट डिग्री करेंगे तो करियर स्विच करेंगे, या मास्टर्स करेंगे. तो आपका पहले दिन से ही मन था कि करियर स्विच करना है, कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट कर लिया? Okay, so as I told you now, to circle back to connect the dot, जब मैं 11th में गई थी ना, then it was kind of my 5th grade because of, you know, medium change. I was still learning. So even whatever I received, chemical engineering is what I received. I focused on कि अब जो मिला है, I want to excel in that. So that was my focus. So I didn't try to change my score. I tried to stabilize and then build on my foundation. But the good part was, first year में मेरे scores अच्छे आए, तो I did get a chance to choose and change the department. But जैसे electronics और electrical मिल रहा था मुझे, but मैंने choose किया कि नहीं, ठीक है, जो मुझे मिला है I want to focus in there, and then build on to, like, slowly build on to what I want. First year, second year, I was just focusing on what I was learning, and at that time my father was working at Tata Steel, and he said that there's a scholarship, if you perform well you may get some scholarship. So my focus was to just excel and learn things, because it was, for me it was very much destabilization. वो medium के कारण भी, or you know, I'm into a different city. That was the first time I'm living in a different city. So but I got good grades. I completely focused on studies, so good grades मिले तो उससे scholarship भी मिल गया. So everybody was happy, including me. तो In undergrad, अंडरग्रेड स्कॉलरशिप मिलना तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. Yeah. तो आपको पूरी फुली पेड? partially paid, so 50% paid, but that is also relief, you know. तो इंजीनियरिंग के बाद you cracked Cognizant. That was through on campus या फिर off campus? That was on campus. India में तो like companies, they come on campus, they take your interviews and they take your test, very rigorous aptitude test they opt for. उसके बाद फिर interviews होते हैं, तो on campus था. But it was a conscious decision by third year, because I used to go to industries, chemical industries पे, है ना. I realized कि I'm allergic to molasses smell. तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं core में तो काम नहीं करूँगी. So I had to again make a career switch कि ठीक है, अभी chemical engineering किया है, but I want to try my second passion, which is, you know, computers. तो वहाँ से it was clear कि I wanted to work in anything related to computers and technology side.
So I just applied. The first company was Cognizant, and I just applied and did my actions. And I'm so glad that I got into Cognizant Technology Solutions from that time on. एक इंडियन स्टूडेंट में हमेशा ऐसे एक ड्रीम होता है कि अगर उन्हें अंडरग्रेड में एक्सपीरियंस कॉलेज का अच्छा ना हो तो होता है कि यार अब मैं मास्टर्स अच्छे स्कूल से करूंगा। तो इवन तो आपको कॉग्निजेंट में जॉब मिल गई थी, आपका क्या ड्रीम था? डू यू स्टिल वांट टू परस्यू दैट हायर एजुकेशन और यू वर हैप्पी विद इट? During my 4 years, I realized कि मुझे अपना जो this is not the end. I had to do something else. कहाँ से क्या, that I didn't know. My focus was to get the best of the class education and knowledge. वो जहाँ से मिलेगा I will try that. तो इसके लिए I enrolled myself into IMS and Time, जो कि ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को to get into IIMs, जो CAT के एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए. So I enrolled myself in 3rd year before campus selection happened. Actually that helped me, that training helped me crack my first interview itself. तो हाँ, जो वो आइडिया था ना कि हाँ अब क्या करना है, that idea was there कि अब कुछ हायर स्टडीज़ करना है. आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट कि M.Tech करना है या फिर MBA करना है. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई न्यू दैट आई हैड टू further pursue my career. Campus placement happened, but then so because I used to go to the conferences and workshops that IMS and Time used to conduct, and then I used to hear people coming from international experience, not just IITs and IIMs, but also Harvard, also from Yale and Duke, that how they are building their career. तो वहाँ से my knowledge seeking thing became that अब मुझे I was completely into growth journey. जैसे एक होता है ना second class आया है for 10th grade में, फिर 12th में I got first class. It was a growth journey. I wanted to continue and do the best in my masters. तो that was my next step. तो यहाँ से इंस्पिरेशन आई टू स्टडी एट MIT, राइट? या वहाँ से मतलब बहुत पहले सेकेंड थर्ड ईयर में ही पता था कि मतलब आई वांटेड टू एस्पायर एंड डू माय फाइनल एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट इन क्लास. बट एग्जैक्टली क्या होगा कैसा होगा वो मुझे पता नहीं था. बट आई डिसाइडेड दैट आई विल वेट बिकॉज अब एक बार जब जॉब मिल जाता है ना, एंड आई नीडेड दैट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली. तो इसके लिए दैट वॉज माई नेक्स्ट पड़ाव. तो इंडिया में क्या है ना कि अगर किसी को करियर स्विच करना हो मैनेजमेंट, लोग 5 साल अपना प्रोफाइल बनाते हैं. अगर किसी US में अच्छा MBA करना हो, इंडिया में करना हो तो वो MIMs के लिए जाते हैं जिसके लिए 2 साल में प्रोफाइल बन जाता है. सो आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की? आपका मन था कि आप MBA करोगे या फिर कि आप MIM करोगे, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, या फिर मास्टर्स इन MBA जो होता है वो 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला होता है, MIM 2 years. तो हाउ डिड यू फिगर आउट योर नेक्स्ट करियर गोल कि आपको ये MIM करना है, MBA करना है to land into the world of management? My focus was to first clear off any loans that I had financially to support my education. Second was to become financially independent to support my family as well, which was needed at that time. Keeping my stability with job, keeping my learning progress at the same time. So क्योंकि ऑलरेडी 2 कंस्ट्रेंट थे ना, तो मैंने बाकी सारे कंस्ट्रेंट को हटा दिया था. एंड एज वी नो इन ऑप्टिमाइजेशन मिनिमम कंस्ट्रेंट गिव्स ऑप्टिमल रिजल्ट, राइट? सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं प्लान किया था. बस ये 2 चीज़ें थी कि स्टेबल जॉब एंड स्टेबल इनकम होना चाहिए और लर्निंग कंसिस्टेंटली होनी चाहिए. सो आई बिलीव इन प्रोसेस. अगर डेली इफ़ आई वर्क ऑन डेली बेसिस, आई न्यू दैट माई जर्निंग वुड बी लॉन्ग. जब फर्स्ट टाइम मैंने GRE दिया था, मेरे स्कोर बहुत ही बेकार आए थे. देन आई रियलाइज्ड कि आई एम स्टिल ऑन दैट पाथ. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई जस्ट लर्न एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस while maintaining supporting myself financially and my family as well. तो उस टाइम तक it was very subtle level progress which was happening. So when we see a graph, when we see a iceberg, right, तो उसके नीचे कितना ज़्यादा होता है ना, तो वो मैं उस पर काम कर रही थी. तो foundation took years to what we see that now a degree at MIT, 1 year degree, तो उसके लिए ना 10 साल लगे हैं वो build करने के लिए, including my 11th, 12th, including my undergrad. All that time I was learning and building up, right? I was learning all this language को फिर कैसे connect करना है. So it was part of the journey.
Yeah. तो कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद यू कैन फिगर आउट कि हाँ आई एम रेडी टू अप्लाई टू बिजनेस स्कूल? 5 years. 5 years के experience के बाद I knew that I was ready to apply. So first 5 time years cognizant में, right? हाँ हाँ Okay. fully cognizant, but वो different customers पे हम लोग काम करते हैं, it doesn't feel like that I'm just working for one thing. So different technologies, different customers, different aspects that you work on. So it was just given a plethora of opportunities for me to work on. तो आप काम क्या करते थे cognizant में? Sorry मैंने पूछा नहीं पहले. हाँ, No worries. हाँ, So I did so many different roles, such as I started with developer, but फिर मैंने testing का भी काम किया. Then I also worked as a project manager, as a quality assurance automation lead. So all different, from core basic to different roles. जो भी मुझे दिए गए, I happily chose that because I used to keep just one constraint at a time. जैसे जब मुझे transfer चाहिए था, तो my only constraint was give me transfer close to home because I wanted to be closer to home in Kolkata. So मुझे एक transfer दे दो and I will work on anything. So ऐसा मैं constraint just एक ही रखती थी और then that's it. So that's how it was very helpful for me and my leadership to work very closely. And that's when I got my H1 also. कि मैंने उनको बोला था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी, क्या सब ठीक है. But yeah, if I get an opportunity, I would love to get this opportunity to work for international customers because I felt I was ready, and that really broadened my horizon when I came here for the first time in H1 visa and worked for Walgreens. That was challenging at the same time, but very helpful to learn and work for different customers. फिर ऐसे करके 5 साल में I knew कि I am ready, so I applied for HALT in 2017. I got accepted. मेरे scores अच्छे नहीं थे उस टाइम पे. So I thought कि ठीक है, अगर बिना कुछ preparation के अगर ऐसा है, let me take some time, prepare and then let's apply again. I had just one constraint again. That was that I wanted to get the best in class experience. I don't want to just say education, because when you go to Harvard or MIT or any of the Ivy Leagues, it's that entire experience that you get. And I'll talk in detail about experience later. But yes, 2017 I applied into HALT, I got accepted. 2018 I prepared better, improved on my profile. I got accepted into Georgia State and Georgia Tech. उस टाइम पे मैंने डेफरेंट ले लिया, बट नसीब में लिखा था यहीं पे आना, तो क्या करती है. Then I took sabbatical, worked, and I got rejected in 2018 from MIT. Yeah. So then sabbatical कैसे लिए? H1B पे sabbatical allowed होता है एक साल के लिए? H1B पे I went back home. So I was not working here. I took a sabbatical off, wherein for 6 months I can go back home. So as soon as you leave US, you don't get paid in dollars. It's unpaid leave, but your H1 will still be valid. तो वो H1 stop हो जाता है. तो ये सारे nitty-gritty में से सारे ढूंढ के रखे थे. क्या बात है. Yeah, so 2018 में when I got rejected from MIT but got accepted from Georgia Tech and State, I then still decided to pursue because that 1 year का experience, I knew that I'm going to do 1 year program. The experience that I wanted to get, I decided that मैंने ना अपने आप को इतना time नहीं दिया है, तो let me prepare on myself more, और then I will see what is gonna happen. Nobody was ready for me कि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आया ये आइडिया, क्या मतलब ऑलरेडी हो रहा है सब अच्छा, क्या चाहिए तुमको, now you're never satisfied. मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बट आई रियली फेल्ट कि अगर थोड़ा सा और काम किया जाए तो कुछ और अच्छा हो सकता है. जी लेनी है अगर बेस्ट, अगर मैनेजमेंट डिग्री लेनी है, व्हाई नॉट गेट फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट लाइक MIT? Absolutely. Yeah. And I also felt that it's a risk, as we all know, that when we leave the job and then we are fully on ourselves, or environment का, there are so many black swan events, like COVID was one of the black swan event. We didn't know, it is unpredictable, कब क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, we don't know. तो इसके लिए it's very important that your why should be ready. Why you want to do it, वो बहुत ही clear होना चाहिए. तो अंदर से आई न्यू कि मेरा वाई अभी भी जॉर्जिया स्टेट के लिए रेडी नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू प्रिपेयर मोर ऑन माई सेल्फ. अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता ना, देन आई वुड हैव एक्सेप्टेड कि ठीक है, वैसे भी आई वॉज वर्किंग हियर, राइट. सो आई हैड दैट एक्सपीरियंस, स्विच करने से भी और डिफरेंट हो जाता. सो आई जस्ट नीडेड दैट so that I can invest myself fully for that 1 year experience. So then I went back, prepared on my profile again. It took not just 1 year, but 2 साल लग गए. Then I came back to Nike again for a role.
बट एक साल जब मैंने काम नहीं किया तो आई वर्क वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन माई प्रोफाइल, बिल्ड किया प्रोफाइल को, सारे स्कोर्स, एग्ज़ाम्स और पेपर्स भी बनाए. And then when I came second time to Nike, I also published a paper, white paper, through my work itself, which was in digital supply chain. I took training. So I was also, while I was working on my score, I was also taking trainings. तब जाके फिर 2019 में जब मैंने वापस से अप्लाई किया with a very coherent story. You know, ये the biggest mistake that we make, we are so good, most of us are very good at, when we are given a task, we do great in that, but we are not, when we don't know what to do, तो फिर ना वो coherence build करना miss हो जाता है, which people like invest here, they are very good at, like they know how to build a story around. तो वो second चीज़ को मैंने फिर से improve किया, and then I made a story कि why I decided all the things in my past, so I connected the entire past to my current role and all the scores or papers or achievements और ये सब किया था मैंने. तो उसके बाद then I got accepted. It was the best thing for me for after so long. मतलब जब मैंने देखा वो email, मैं ना एक दिन मैं आई थी ऑफिस काम करने के लिए, मैंने उस दिन किसी से बात नहीं किया ऑफिस में. मैं अच्छा ये क्या हो गया, मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड फॉर so long, 10 years. So yeah. That is mind blowing, and that also getting in your dream. आपका supply chain dream था because आपने paper लिखा supply chain में, and then you applied for management in supply chain. Was it your dream to get? Was it your interest? Definitely, it was my interest because it was also my background. क्योंकि मैं जब Walgreens में काम कर रही थी, it was point of sale, quality assurance in point of sale. The device that I was working on at Nike, it was fully like digital supply chain, supporting the digital supply chain. And I took a training जिसमें कि उसका end crux was that any company like Nike, they wanted to increase their revenue by 3 times just in 2 years time. And how? The question was how. Answer, there were 2 answers. One is via technology, which enables speed, and second was supply chain, which enables efficiency in their business, which handles their constraints. So मुझे लगा कि अच्छा टेक्नोलॉजी तो मुझे अब पता है अच्छे से, अब सप्लाई चेन सीखने का टाइम आ गया है शायद. तो दैट्स व्हेयर आई डिसाइडेड कि ठीक है, दिस इज द कोर्स आई वांट टू टारगेट. तो आपने 1 साल का मैनेजमेंट प्रोग्राम चूज किया MIT में. आपको लगता है 1 year इज इनफ टू डू अ करियर स्विच, बिकॉज क्या आपका गोल करियर स्विच था या फिर जस्ट टू लर्न सप्लाई चेन? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं इसको, लेट मी एक्सप्लेन दिस. व्हेन वी ड्रॉ अ ट्रायंगल, यू नो, तो उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं. एक कॉर्नर वुड बी योर एजुकेशन, विच इज़ नॉलेज, कैसे कह सकते हैं. सेकेंड इज़ द नेटवर्किंग दैट वी get. When I talked about experience, this is the triangle that I want to connect to. So second corner would be networking or social life that we have, and third is the career aspiration and how we draw, you know, how we get out with a better career or job or money or whatever that you're creating a business that we want to create. So this is the experience that I was talking about. तो ये 3 चीज़ें मिलती हैं wherever we go and invest ourselves into that, right? So my focus was to get the best of all these 3 experience. क्योंकि जैसे networking is a major thing, you know, कि तुम्हारे और who is there to support you at different times. And I already knew by that time कि ये जितने भी बड़े schools होते हैं ना, उनका network काफ़ी strong होता है. When you have that @lm.mit.edu, @lm.harvard.edu, it's a very strong support system that you get, and all these 3 things, not just, you know, studies or research. तो अगर मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट में फोकस करती, PhD कर रही होती, तब मेरे लिए रिसर्च शायद ज़्यादा एप्ट होता. बट फॉर नाउ, फॉर मी, ऑल दिस थ्री थिंग्स, 3 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, जैसे समझ सकते हो, वो वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. Oh, so overall the package, networking package plus knowledge and experience, ये 3 है ना? Experience is the career, whatever we are, like money, जो उसके तुम लेके जाओगे ना, what you are going to get out of that, तो career we can say. Career. And this package is what you wanted to get. That's a very well thought answer. So now this 1 year degree से आपने अपने आप को कैसे transform किया for the industry? For the industry. So again I will tell you, give you an analogy, और Venn diagram से बात करते हैं. जैसे 3 Venn diagram अगर बना लिया, 3 सर्कल्स है, राइट. 1 सर्कल फॉर मी वाज टेक्नोलॉजी, जो कि मेरा स्ट्रेंथ था. आई डिसाइडेड टू यूज़ माई स्ट्रेंथ. आई डिसाइडेड नॉट टू लूज़, यू नो, नॉट टू लीव टेक्नोलॉजी एंड जस्ट फुल्ली मैनेजमेंट में चले जाओ. तो उसको मेरे साथ में रखना था. दैट इज़ माई पास्ट.
अनदर वन वाज ऑपरेशंस और जो मैनेजमेंट समझ लो कि कैसे वो जो मैं नया सीख रही थी एंड दैट वाज डोमेन नॉलेज दैट आई वाज गेटिंग right. And the third circle is the people management skills like project management, program management. ये सारे जो होते हैं ना वो भी that I learned from my past plus my current experience, जो कि so many clubs that we connect with, networking aspect. जो ट्रायंगल बनाया था उसी ट्रायंगल में अगर वेन डायग्राम डाल दे तो ये जो जो उसका तीनों ट्रायंगल का जो कॉमन एरिया है राइट, द शेडेड कॉमन एरिया, I wanted to use that as my strength because that is my strength, right? That is what I was bringing to the table for all the time that I was working for tech consulting or Nike or as a project manager or as a technologist, and now learning the best of operations from the world's best college, I decided to use and play on my common area. So जितने भी roles मैंने target किए थे वो around the same था, तो उसके लिए what it is called equivalent is program manager in operations strategy. So it's not fully marketing, not fully finance or not fully like sales. ये ऐसा नहीं है, तो it's like mix of all. You will use your technical skills and therefore I also targeted mostly the tech industry, which we also call MANG. Program management is mix of yes people management, technology and the management aspect of what business aspect of what we learn. And by the way दोस्तों जिनको नहीं पता, Lipsy is also author of this book called Sorry to Congratulations, which highlights her journey about reaching Google, not just Google, to all the companies she applied to. तो आप बताना कि अब चलो MIT भी हो गया, how did you start with your journey to apply to big tech? कैसे आपने consider किया? Because like लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे आप बड़े कॉलेज चले जाओगे, आपको इमिडिएटली यू विल बी एक्सेप्टेड टू यू नो बिग कंपनीज एज कंसल्टेंट या फिर बिजनेस मेजर्स, पर इट्स स्टिल मोर योर एफर्ट. यूनिवर्सिटी सिर्फ प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आपने बताया MIT.edu वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है. तो व्हाट इट टुक टू रीच टू गूगल एंड ऑल द बिग टेक कंपनीज? So जैसा कि मैंने तुमको पहले एक्सप्लेन किया था, so because it's part of this book कि how do you identify your goal, right? First is to identify your goal based on our strengths and weaknesses. तो वो reflection time बहुत ज़रूरी होता है. तो I also call this process as soul searching process, which I have spoken in this book. So my focus was based on my strengths. So my goal was also based on my background, my strengths and weaknesses. So my strength was in technology, my strength was in operations, supply chain management, my strength was in program and project management. So I decided that I should look for those roles which are on the overlap of all these three things. If we draw a Venn diagram, that is the overlap I come up with. तो फिर उसी के around I searched my roles in all different companies. I started applying. ये पूरा process लंबा चलता है. It's a 6 months process wherein you reach out to people. First you get clear after doing the soul searching that what are your whys. अगर तुम्हें गूगल में अप्लाई करना है तो क्यों करना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ना ये अनियन पीलिंग बहुत अच्छे से होगा और तब आंसर नहीं कर पाने से इट्स ड्रिलिंग तो दैट ड्रिलिंग इज़ एनी वे गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग इंटरव्यूज़. सो इट्स बेटर वी स्टार्ट डूइंग इट लाइक गिव योर सेल्फ 6 months टाइम. तो आई गेव माई सेल्फ 6 month टाइम. आई डिड दैट सोल सर्चिंग कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस, draining at the same time. So that's why you need a mentor. I received so much support because of the network that I had from school, from my previous past education. So first was identifying my goal based on my background, and then second was I knew that I'm not going to leave technology. तो मैंने technology companies में ही focus किया था. And I just started to apply and prepare on my stories. Story को prepare करना, it's a long process as I said. First is creating your goal. Second is working through and preparing for the write-up, like the written test that Amazon takes, right? उसके लिए कैसे prepare करना है. उसके बाद hiring manager, तो it's a step-by-step approach. It's a framework that you need to follow. तो hiring managers के साथ कैसे बातें करनी है तुमको. Recruiter के साथ what you should talk so that recruiter doesn't feel that you are wasting their time. Because you have to, I knew that every opportunity of interview that was given to me was an opportunity to succeed, was not a barrier, तो उसके लिए how I had to prepare. So I used to talk to a lot of people and all of them were my alumni and network, so I got a lot of support from them. And the career section that we had in supply chain management, the career managers
they were very very helpful with हमारे पास बहुत कुछ है प्रोफाइल बैकग्राउंड का, बट उसमें से क्या हाईलाइट करना है, राइट? हाउ डू आई प्रेजेंट माई स्टोरी इन सच अ वे सो दैट जो मेरे स्ट्रेंथ्स है ना, हिडन स्ट्रेंथ्स विच इज़ इन माई सबकॉन्शियस, वो हम लोग उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, उसको कैसे ब्यूटीफुली इन्हांस करके बताना है. सो दिस इज़ अ प्रोसेस, सो आफ्टर गिविंग 46 रियल इंटरव्यूज़ देन आई सॉ द पैटर्न कि हर एक कंपनी का एक पैटर्न है, हाउ दे टेक द रिसोर्सेज फॉर द प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल्स और सीनियर प्रोग्राम मैनेजर रोल्स और सप्लाई मैनेजर और एनी मैनेजर और अबव रोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. दैट्स व्हाट आई लर्न इन ऑल दीज 46 इंटरव्यूज. एंड वो हर पैटर्न डिफरेंट है, मतलब जैसे ऐसा है कि हर कंपनी का पैटर्न सिमिलर है कि इट इज़ डिफरेंट? जो ग्राउंड वर्क है, नॉट द फ्रेमवर्क, द ग्राउंड वर्क इज सेम, फाउंडेशन इज सेम, एंड दैट फाउंडेशन इज योर Amazon 14 प्रिंसिपल, एंड स्टार फ्रेमवर्क, दैट इज द सेम. उसमें ही इन्हांसमेंट्स होते हैं. जैसे अमेजोन का जो पैटर्न है इज़ कम्प्लीटली यू नीड टू प्रिपेयर योर स्टोरीज इन फॉर 14 प्रिंसिपल्स इन स्टार मेथड. अब उसमें यू कैन लाइक गो टू अ डिफरेंट लेवल कि अपनी स्टोरी को कितनी ब्यूटीफुली इन्हांस कर सकते हो तुम. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनालॉजी देती हूँ. When we are at first floor, we have a different view of the city, right? When we are at 30th floor, we have a different view of the city, and when we are at 50th floor, एक अलग view होता है. सेम गोज विथ आवर स्टोरीज एज वेल. जैसे कि तुमने जो काम किया है उसको तुम कैसे प्रोजेक्ट करोगे, इट्स वन वे यू राइटिंग इट, सेकेंड वे somebody else reviewing it, थर्ड लाइक 50th फ्लोर इज सम मेंटर हु इज एक्सप्रेसिंग दैट ओके यहाँ पे ये 2-4 चीज़ें चेंज करोगे ना तो इट विल बी इनहैंस्ड. तो ये जो फीडबैक लूप है, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड आई लर्न इट फ्रॉम वन ऑफ आवर कोर्सेज, सिस्टम डिज़ाइन कोर्स विच इज़ कोर टू MIT. वहीं से वो इम्प्लीमेंट हुआ था, वहीं पे वो पढ़ाया जाता है, वहीं से वो सिखाना चालू हुआ था थ्रू आवर प्रोफेसर्स. सो आई यूज़ दैट टेक्निक फॉर मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यूज़ एज वेल. बट टू कम टू अ क्वेश्चन, येस, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है स्ट्रक्चर एंड डिफ़िकल्टीज एज वेल. और अनदर कोर पार्ट इज़ दैट जैसा तुम परफॉर्म करते हो ना इंटरव्यू में, बेस्ड ऑन दैट योर लेवल इज़ डिसाइडेड. For example, it's coding interviews are very different, wherein you have written the right code, yes or no, 0 or 1, right? But program manager roles or senior program manager roles are different in a way that उसकी जो वेरिएशन होता है ना, it's like bell curve. अगर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुमको पता चल रहा है कि तुमने कितना उसमें प्रोग्रेस किया है. तो that's how you have to put your stories into a right structure and framework. उसके लिए बहुत ज़रूरी है तुमको प्रिपेयर करना. एब्सोल्युटली. एंड आपने हमेशा बिजनेस डिग्री को यूज़ करके सिर्फ प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया कि यू टारगेटेड ऑल द बिजनेस रोल्स? नहीं, I focused only on program management roles or mostly program, because program manager वो role है ना which is exactly on the overlap of technology, business and like heavy cross functional collaboration. तो यही वो प्रोग्राम मैनेजर रोल है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ड्राइव करता है ये सारी चीज़ें. So that's why my target was that, because my strengths were that. वंडरफुल. Yeah. एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आप बिजनेस डिग्री से सैलरी इंक्रीज होती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस डिग्री इज सो एक्सपेंसिव. आपने 1 ईयर में किया, बाय द वे जिनको नहीं पता, शी गॉट स्कॉलरशिप बट स्टिल इट इज अराउंड $100,000 पर Yeah. 1 ईयर का. तो यू हैव टू टेक लोन, उसके लिए सेव करना. तो डज दैट लीड टू अ रिटर्न बिग इनफ एज वेल? Of course, मतलब 1 साल तुम इन्वेस्ट करते हो ना उतने पैसे, और तुम तो वी आर गोइंग टू अर्न फॉर लाइफ टाइम, राइट? But I want to tell you, it's not so easy and transactional the way we want to see it. Let me give another perspective. Remember the concept that I spoke about, the triangle? It is the experience that you want to go for, right? Not just one. So a table is standing on 4 legs, right? So same way our system is standing on 3: the network, the social life that we have, and the knowledge that we gain, and the career that we get. Career is just one aspect of it, right? तो वो अल्टीमेटली जो नॉलेज और नेटवर्क है ना, both of them helps you to get it. So it's like all 3 of them is helping each other. So for short answer, this is another perspective, but short answer is yes, it helps, because in long run, it's not just that the money that you get out of your job, but it also the satisfaction that you see. जैसे कि बहुत सारे मेरे कॉलीग्स और फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ों पे काम कर रहे हैं. सो आई डू हैव इंटरेस्ट इन ऑल दैट. Right now I'm working at Google, but I don't know where I will be in few months or few days, right? So I want to embrace that uncertainty
instead of because life is uncertain, instead of being forced, let's embrace that uncertainty. तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत help करती है. The soft skills that we carry, right, the people skills that we carry, how supportive we are for the community, कितना support करके एक दूसरे को अपना help कर रहे हैं, like that's a referral come into picture, right? तो ये सब आपस में connected है. It's not just the money and the career that we get out of college in 1 or 2 years, but it is the long term support system that we build around us. Awesome. अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरव्यू जैसा लगेगा, बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? बिजनेस डिग्री हो गया, नाउ एट गूगल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? व्हाट्स योर विजन? Vision. Very good question. So my vision now is to utilize again my superpowers, such as a degree from MIT, experience at Google, and then impact lives, such as कैसे मैं उनको help कर सकूँ. People who are working in blue collar jobs, people who don't have resources, people who didn't have that resource to get into top 10 universities in world to get their education or that network. तो उनको मैं कैसे help करूँ? How do I enable them to achieve their dreams? Maybe that is what impactful growth sounds to me, along with so this is what impactful growth is, what I want to create. And I believe that's the reason you wrote the book as well. So can you share how can this book help the students watching this video? Sorry to congratulations, by Lipsy. Yeah, so how this book is going to help? This book will first give that vision to people कि वो हिंदी मीडियम से आए, चाहे 10th में फर्स्ट क्लास नहीं आया, या फिर 11th में इंग्लिश में फेल किया हो, या फिर जितना भी सेटबैक्स देखा हो. It doesn't matter, how still they can gain that confidence कि what work that they have done, उसको use करके how they can still achieve their dreams, even though there's career gap in their life, whatever challenges that may have, वो फिर भी कैसे ये टॉप टेक कंपनीज में जा सकते हैं. Building that belief is the biggest challenge, mindset is the biggest thing. तो वो सबसे पहले चीज़ है. And then providing this book is not a book. I call it as a workbook. So it's a tool. It's a toolbox which has the frameworks and the step-by-step approach की because this journey is very long and very exhaustive as well. तो वो तुम्हें क्या-क्या step कब लेना है, and giving you all the plethora of questions and suggestions. This book also has my responses for most of important questions की, तो उससे जब मैं अपना बताऊंगी ना, तो others will also be able to derive and write their stories. अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. This is the structure. So most of the responses I've entered into a framework. So when this is the framework, it's very helpful for anybody. वो किसी भी जॉब में हो, वो उसको अपने उस फ्रेमवर्क में डालने से उसको पता चलेगा कि अच्छा, if they present themselves in that way, that will be very very helpful. So this is the first level where they can come to a certain level कि ठीक है, अब ready apply करने के लिए for their dream job. Then they should definitely use the tools given in the book and then prepare कि अब क्या चाहिए. basic 5-6 चीज़ें हैं इसमें, वो कर लिया तो sufficient है. They can skip reading 300 pages of long books, Wow, ये दिख ही रहा है. It has everything in bold, काफ़ी चीज़ें bold में, and it's very thin. तो ऐसा नहीं लगता कि यार मैं बोर हो जाऊंगा. और प्लस ये जो आप स्किल्स आप दे रहे हो, आई कैन टेल यू कि किसी को भी अगर बिजनेस कंसल्टेंट हायर करना हो फॉर देयर बिजनेस डिग्री या फिर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, करियर चेंज करना हो, इट इज सो एक्सपेंसिव. बट गेटिंग दैट विजन ऑन योर ओन बाय रीडिंग अ बुक is excellent. Thank you so much for providing this. मैं खुद read करने वाला हूँ. And any final words from your end? आप शेयर करना चाहोगे? Final words from me would be to continue to believe in your dreams, continue to believe in you. Everything is possible. But find the right mentors. Consistent effort और right mentors जो है ना, वो काफ़ी time save करता है. So when I used to mentor people, that's what I used to say, that I'm your Google Maps. So point A से point B का distance minimum time में cover हो, उसके लिए having a mentor is very very helpful. So find the right mentor, have a structure and have faith that the dreams that we want, that we see, all of us, is all achievable, and then just persevere. Absolutely. Thank you so much, Lipsy, for sharing your knowledge. And you can check out her book in description below. आप Amazon कहीं से भी आप ले सकते हो. And it was wonderful learning from you. मैंने खुद आपसे बहुत कुछ सीखा है. And I'm gonna read it myself. Thank you so much. Amazing. Thank you. Thank you.